Good morning students. In previous lecture we discussed about beekeeping and today we discuss about next chapter diversity in living organism. Different organisms that survive on earth and we cannot study one by one, and to make the study easier we classify living organism. Again I repeat, chapter name is diversity in living organism. Diversity means different विभिन्नता, अलग अलग टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारी अर्थ पर सरवाइव करते हैं, बट वी कैन नॉट स्टडी वन बाय वन to all living organism because number of organism is very more. We cannot study one by one, and to make the study easier we classify the living organism. इज इट क्लियर बेटा? क्योंकि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं अर्थ पे, हम उनको स्टडी करने के लिए पहले उनको ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं. सबसे पहले एरिस्टोटल हैव ट्राइड टू क्लासीफाई द लिविंग ऑर्गेनिज्म वेदर दे लिव्ड ऑन लैंड, दे लिव्ड ऑन एयर, दे लिव्ड ऑन वाटर, in air and on land. But at the same time shark, whale, octopus, they are survive in water but they have a more differences from each other. पर उनमें बहुत सारा क्या होता है, डिफरेंस होते हैं. सो एरिस्टोटल क्लासिफिकेशन हैव नो इम्पॉर्टेंस. नेक्स्ट आफ्टर दैट Carolus Linnaeus have tried to classify all the living organism in two kingdom classification, Plenty and Animalia, but that have also no importance. After that Whittaker, Haeckel, Voss have tried to classify the living organism, but at last Robert Whittaker classified the 5 kingdom classification. इज इट क्लियर बेटा? सबसे पहले एरिस्टोटल ने ट्राई किया क्लासीफाई करने के बेस पे, फिर कार्लस लिनस ने किया, आफ्टर दैट विटेकर, हैकल, वोस ने ट्राई किया कि ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई कर दिया जाए, बट लास्ट में रॉबर्ट विटेकर ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया इनटू 5 किंगडम. दीज किंगडम्स आर, फर्स्ट वन इज मोनिरा, सेकेंड वन इज प्रोटिस्टा, third one is fungi, fourth one is plenty, fifth one is animalia. And Whittaker classify all the organism into 5 kingdom. First kingdom is Monera, second is Protista, third is fungi, fourth is plenty, fifth is animalia. On the basis of, किस बेस पे ही इसने 5 kingdom classification दी? On the basis of cell structure, कि सेल का स्ट्रक्चर कैसा है, सेल स्ट्रक्चर के बेस पे. सेकेंड वन इज मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, थर्ड वन इज बॉडी ऑर्गेनाइजेशन. बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इन 3 बेसिस पे विटेकर ने सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासीफाई कर दिया. मोनिरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लेंटी एंड एनिमिलिया. दीज आर डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सेल स्ट्रक्चर, मोड एंड सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, कि वो खाना कैसे लेते हैं. न्यूट्रिशन का मतलब होता है, न्यूट्रिशन मीन्स इनटेक ऑफ फूड,
how they take food and its utilization, that is known as nutrition. Next one is body organization. On the basis of these, they are all living organism classified into 5 kingdom by Robert Whittaker. Is it clear beta? Next after that वोस ने क्लासीफाई किया मोनीरा को. मोनीरा आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 subgroups in that is known as Archaebacteria and Eubacteria. Was classified Monera into Archaebacteria and Eubacteria. Is it clear beta? Next I tell you about the groups further divided into subgroups and separating the organism, and we give a particular name on the basis of hierarchy order. Hierarchy order is kingdom, phylum, order, kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Now we discuss further classification is done by naming the subgroups at various level and as given in a flowing scheme like this one: kingdom, phylum, class, order, family, genus, species. Beta, this is known as hierarchy order. हायरार्की ऑर्डर ऑफ क्लासिफिकेशन. जब भी हम किसी ऑर्गेनिज्म का नेम प्रोवाइड करते हैं, नेम देते हैं, तो हम इस इन हायरार्की ऑर्डर में ही एक्सप्लेन करते हैं. एंड नाउ दिस सीक्वेंस we learn these sequence in line wise. Like firstly we write the kingdom of organism, then we write the phylum. In the case of animals we write the phylum, and in the case of plants we write division, and then class, order, family, genus, species. और इसको सीक्वेंस में लर्न करने की एक टेक्निक होती है कीप पॉट क्लीन और family get sick. This is the sequence. In this way we learn the sequence of this one hierarchy order: kingdom, phylum, class, order, family, genus and species. Keep pot clean or family get sick. In this way we learn the hierarchy order. Is it clear beta? And species is the basic unit of classification, and species is a group of similar organism that interbreed with each other. Species क्या है? एक बेसिक यूनिट है क्लासिफिकेशन की. और स्पीशीज क्या होता है? ए ग्रुप ऑफ सिमिलर ऑर्गेनिज्म एंड दे आर इंटरब्रीड विद ईच अदर. जैसे ह्यूमन बींग्स हैं, ह्यूमन बींग्स सारे एक ही स्पीशीज से बिलोंग करते हैं और वो एक दूसरे की तरह सिमिलर दिखाई देते हैं एंड दे इंटरब्रीड विद ईच अदर. Is it clear beta? Interbreed means they are reproduced with each other. Clear है beta? Next we discuss about 5 kingdoms: Monera, Protista, Fungi, Plantae and Animalia. First one, I tell you about characteristics of Monera. Monera are prokaryotic and unicellular.
5 किंगडम में से सिर्फ मोनीरा ही है जो क्या है, प्रोकैरियोटिक है। आई थिंक यू नो अबाउट दैट प्रोकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल इज दैट सेल विच डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। जिस सेल के अंदर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, ये न्यूक्लियर मटीरियल प्रेजेंट विदाउट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, दैट सेल इज नोन एज प्रोकैरियोटिक। इज इट क्लियर बेटा? सो वी स्टार्ट फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स। मोनीरा आर, these organisms are, जितने भी बैक्टीरिया हैं इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में, दे बिलोंग्स टू मोनीरा ग्रुप, मोनीरा किंगडम। जितने भी बैक्टीरिया हैं इस अर्थ के ऊपर, दे बिलोंग्स टू मोनीरा किंगडम। इज इट क्लियर बेटा? दीज ऑर्गेनिजम्स आर unicellular means they are made up of a single cell. So Monera are unicellular and prokaryotic. Prokaryotic means the cell do not have well defined nucleus and nuclear material present without nucleus membrane. That cell is known as prokaryotic. जितने भी अर्थ पे ऑर्गेनिज्म हैं, बाकी 4 किंगडम यूकैरियोटिक हैं। सिर्फ मोनीरा का एक स्पेसिफिक कैरेक्टर होता है, दीज ऑर्गेनिज्म आर प्रोकैरियोटिक। इज इट क्लियर बेटा? नेक्स्ट वन, सम हैव cell wall, while some do not have cell wall. Some do not have cell walls. कुछ ऑर्गेनिजम्स के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट होती है और कुछ ऑर्गेनिज्म के बाहर सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती। इज इट क्लियर बेटा? एंड थर्ड वन इज मोड ऑफ न्यूट्रिशन। सम हैव ऑटोट्रॉफिक एंड सम हैव heterotrophic, because some bacteria they prepare their food by own self by the process of photosynthesis, and some bacteria are heterotrophs, they depend on others for their food. So third point, some are autotrophic, some are autotrophs, some have autotrophic nutrition. What do you mean by autotrophic nutrition? Autotrophic nutrition is that nutrition in which organism can prepare their food by own self, that is known as autotrophic nutrition. Clear? And some are heterotrophic. Some have heterotrophic nutrition. Heterotrophic nutrition means they depend on others for their food, that are known as heterotrophic. Some bacteria are autotrophic, they can prepare their food by the process of photosynthesis, and some are depend on others for their food, that is known as heterotrophic nutrition. Is it clear beta? These are the characteristics of Monera. Organisms are unicellular and prokaryotic. Unicellular organism made up of a single cell. Prokaryotic, nucleus without nuclear membrane. And after that, some have cell wall, some do not have cell wall. Some have autotrophic nutrition and some have heterotrophic nutrition. Clear beta? Next example, cyanobacteria.
Cyanobacteria. Cyanobacteria is also known as blue-green algae. Blue-green algae and cyanobacteria, same thing. Next is Anabaena. Mycoplasm. Mycoplasm is the smallest cell in our world and on our earth. Mycoplasm. Is it clear, beta? Cyanobacteria is also known as blue-green algae. Next we discuss Protista. Protista. Monera and Protista on our earth are unicellular, and one is yeast, is fungus, that is unicellular. Other organisms are multicellular. Only those organisms belong to Monera and Protista are unicellular, and other organism which belongs to other groups that are multicellular. Only Monera and Protista and one fungus is yeast. So Protista are unicellular. These are unicellular. And eukaryotic. Eukaryotic means nucleus is well defined and nucleus are covered by nuclear membrane. That cell is known as eukaryotic. Is it clear? Second point, mode of nutrition. Mode of nutrition may be autotrophic, and heterotrophic. ऑटोट्रॉफिक भी हो सकते हैं और हेट्रोट्रॉफिक भी हो सकते हैं. जैसे प्रोटिस्टा ग्रुप के जो ऑर्गेनिज्म हैं, जो भी प्रोटिस्टा ग्रुप से बिलोंग करते हैं, सम आर ऑटोट्रॉफिक एंड सम आर हेट्रोट्रॉफिक. एंड नेक्स्ट वन इज मेन फंक्शन ऑफ प्रोटिस्टा ग्रुप. दे हैव ए बॉडी अपेंडेजेस, वीप लाइक फ्लैजिला, hair like cilia are present on their body surface. Like that, paramecium belong to Protista group. That is a foot shape organism, not organ, organism. They on the body surface of cilia, on the body surface of paramecium, on the body surface of paramecium, hair like structure is present. That is known as cilia. One organism is Euglena. Euglena have a flagella. Euglena that have a flagella. And one is amoeba. Amoeba have also appendages, that is known as pseudopodia. So main function of Protista, they have body appendages, and hair like structure is cilia and weep like structure is flagella. That helps in movements करने में help करता है, and that help is movement of body parts की movement करने में help करते हैं. So they have body appendages. Appendages मतलब part. Appendages, weep like flagella,
in Euglena flagella is present, and hair like cilia is present on the body surface that helps in movement and are moving around मतलब ये कहीं भी चारों ओर कहीं घूमना हो तो ये जो सिलिया हैं और फ्लैजिला हैं उनको मूवमेंट करने में हेल्प करते हैं। इज इट क्लियर बेटा? एग्जाम्पल्स आर प्रोटोजोन्स, 3 protozoans I explain: Paramecium, Euglena and Amoeba. Protozoans, diatoms, etc. Is it clear beta? Next kingdom we discuss fungi. Next one, fungi are heterotrophs. Heterotrophs means they depend on others for their food. अपने फूड के लिए ये औरों पे डिपेंड रहते हैं. दीज आर हेटेरोट्रॉफ्स एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. एंड वन इज ए टाइप ऑफ हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट इज नोन एज saprophytes. These are also known as saprophytes. Saprophytes organism, they can prepare their food from the dead decaying organic matter like मशरूम होती है, फंगस होती है, वो कहीं भी गले सड़े सब्सटेंस पे ग्रो कर जाती है. इवन रॉटन ऑर्गेनिक मैटर लाइक रॉटन फूड मटेरियल, वेजिटेबल्स, इवन ऑन वुड पे भी फंगस क्या करती है, ग्रो कर जाती है. दैट इज saprophytes are those organism they can prepare their food from the dead decaying organic matter, and this type of nutrition is known as saprotrophic nutrition. And saprotrophic nutrition is a type of heterotrophic nutrition. Is it clear beta? Again I repeat, fungus are heterotrophs and multicellular. मोनीरा एंड प्रोटिस्टा आर यूनिसेलुलर, एक सेल से बने हैं, पर फंगस इज ए मल्टीसेलुलर एक्सेप्ट ईस्ट. एक ईस्ट को छोड़कर बाकी फंगस क्या होती हैं, मल्टीसेलुलर होती हैं. इज इट क्लियर बेटा? एंड टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन. दे डिपेंड ऑन अदर्स फॉर देयर फूड, and this type of organism is known as heterotrophs. And in fungus particularly saprotrophic nutrition, and fungus are also known as saprophytes. Saprophytes means they can prepare their food from dead decaying organic matter. Is it clear beta? These organisms have a cell walls. They have cell walls which are made up of complex sugar
complex sugar is called chitin. वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, फंगस में से बहुत बार क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू मीन बाय सैप्रोफाइट्स? दोज ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर फूड फ्रॉम डेड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर. नेम ए सब्सटेंस which is present in fungal cell wall. That complex sugar is known as chitin. Is it clear बेटा? चिटिन एक कॉम्प्लेक्स शुगर इसके अंदर प्रेजेंट होती है. एग्जाम्पल्स आर ईस्ट, मशरूम, एक्सेट्रा, पेंसिलिन. पेंसिलिन आल्सो फंगस. Is it clear beta? Next I tell you about next term, symbiotic relationship. Symbiotic, what do you mean by symbiotic relationship? Very important. When two organisms are mutually depend on each other, that are known as symbiotic relationship. जो दो organism एक दूसरे पे depend करें, mutually they depends on each other, this type of relationship is known as symbiotic relationship. And the symbiotic relationship between fungus and blue-green algae. Blue-green algae means cyanobacteria. That term is known as lichens. क्लियर है बेटा? फंगस क्या करती है? नरिशमेंट. फंगस और अलगी दोनों एक दूसरे पर म्यूचुअली डिपेंड होती है, जिस सिम्बायोटिक रिलेशनशिप को हम बोलते हैं लाइकन्स. इज इट क्लियर? Now we discuss symbiotic relationship. Symbiotic relationship. When two organisms mutually depends on each other, is called symbiotic relationship. Symbiotic relationship. And the symbiotic relationship between fungus and cyanobacteria, blue-green algae. Relationship between the symbiotic relationship between fungi and blue-green algae. Blue-green algae is known as lichens. फंगस न्यूट्रिएंट्स को ऑब्जॉर्व करने में हेल्प करती है और ब्लू ग्रीन अलगी फंगस को फूड प्रोवाइड करती है. दोनों एक दूसरे पे डिपेंड हैं. फंगस न्यूट्रिएंट्स की अब्जॉर्प्शन करने में हेल्प करता है और ब्लू ग्रीन अलगी फंगस को फूड प्रोवाइड करता है. बोथ आर म्यूचुअली डिपेंड्स ऑन ईच अदर. This type of relationship is known as symbiotic relationship, and particularly the relationship between fungus and blue-green algae, that is known as lichens. That is known as lichens. That is known as lichens.
and lichens are grow lichens are colored patches which grow on the bark of tree. Bark of tree. लाइकन्स कलरफुल पैचेस होते हैं, कलर्ड पैचेस होते हैं जो कहाँ ग्रो करते हैं? बार्क ऑफ ट्री. नेक्स्ट किंगडम इज प्लेंटी. Plenty. All plants belongs to plenty kingdom. You know about that, I think, characteristics of plenty. These are autotrophic. These are autotrophic. They can prepare their food by own self. And plants have cell wall. And cell wall is made up of cellulose. Is it clear, beta? First one, all plants belongs to plenty kingdom. Plenty kingdom, and these are autotrophic. First one is these are autotrophic. These have autotrophic nutrition. बेटा जी, जिस टाइप की न्यूट्रिशन होती है उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऑर्गेनिजम्स हैं, ऑर्गेनिजम्स को बोलते हैं हम ऑटोट्रॉफ्स. क्लियर है? और ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन इज दैट न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय ऑन सेल्फ. ऑटोट्रॉफिक है, यूक्रोटिक है, ये सेल इज यूक्रोटिक. यू नो अबाउट यूक्रोटिक. मल्टीसेलुलर. Multicellular. Next, they have cell wall. They have cell wall walls which are made up of cellulose. Cellulose से बनी होती है. And main character, they have a green color pigment. That pigment is known as chlorophyll. They have green color pigment, chlorophyll, which help in photosynthesis. Plants further divided into subgroups, and division of plenty we discuss in next lecture. Next, all plants belongs to plenty. Next one is Animalia. Animalia, all animals belongs to Animalia. These are eukaryotic. These are multicellular, and they have heterotrophic nutrition. They depend on others for their food. Heterotrophic nutrition. They do not have cell wall. प्लांट सेल के बाहर सेल वॉल होती है, एनिमल सेल के बाहर सेल वॉल नहीं होती. दे डू नॉट हैव सेल वॉल. And no green color pigment is not present in animal group. These are eukaryotic, these are multicellular, and they have heterotrophic nutrition.
they depend on others for their food and they do not have cell wall. All animals belongs to Animalia. Is it clear beta? Thanks for watching. In next video we discuss about division of plenty.